नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड से यू विल नेवर नो योर लिमिट्स अंटिल यू पुश योरसेल्फ टू देम। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेंडेमिक इफेक्ट, डिप इन नंबर ऑफ स्कूल्स, सर्ज इन टीचर एग्जिट्स। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 3 और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। तो दोस्तों, according to report, more than 20,000 schools were closed across the country during 2020-2021, while number of teachers also declined by 1.95% in comparison to previous year. Our next important headline is Gujarat, Rajasthan, Andhra enter club of best performing states in school education index. It is available on page number 8 और ये related है paper 2 education section से। In this article we have to know about the performance grade index and its findings। तो दोस्तों, it is released by Ministry of Education and it measures the performance of states and union territories on uniform scale and helps them in prioritizing areas for interventions. According to recent index, Kerala, Punjab, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh have emerged as the best performance in school education across indicators such as learning outcomes, equity, infrastructure in 2020-2021. Our next important headline is Who polluted Delhi's air? It is available on page number 12 और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिल्लीज एयर पोल्यूशन, इंपैक्ट्स, मेजर्स एंड वे अहेड। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक। Our next important headline is Poverty is down period. It is available on page number 13 और ये related है paper 2 issues relating to poverty and hunger। तो दोस्तों, in this article we have to know about the present status of poverty in India, findings of National Family Health Survey data for 2019-2021, other analysis, various initiatives and what more steps need to be taken in this context। तो दोस्तों, poverty के ऊपर हमारी वेबसाइट पे भी आर्टिकल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और यहाँ भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक। Our next important headline is Fed hikes rates again, what it means for Indian markets, investors. It is available on page number 15 और ये related है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। In this article we have to know what impact will the Federal Reserve move have on Indian markets। तो दोस्तों, recently US Federal Reserve announced its 4th consecutive 70 basis point interest rate hike, right? बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक। Our next important headline is Mauna Loa, world largest active volcano is rumbling. Could it erupt? It is available on page number 15 और ये related है पेपर 1 geography section से। In this article we have to know about Mauna Loa। तो दोस्तों, it is one of 5 volcanoes that together make up the big island of Hawaii, right? Our next important headline is Poppy Love in Afghanistan. It is available on page number 15 और ये related है पेपर 3 internal security section से। In this article, we have to know about the linkage between Afghanistan and opium cultivation and its impact on India। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो a new UN report says that land under poppy cultivation in Afghanistan in 2021 increased by 32% over the previous year, right? Our next and last important headline is Recalling top dog Laika 65 years after path-breaking space flight. It is available on page number 15 और ये related है पेपर 3 space section से। In this article we have to know about the Sputnik 2, who was Laika and why was she chosen to orbit the Earth। तो दोस्तों, in 1957 the Soviet launched Sputnik 2 and made history for carrying the first ever living creature to orbit the Earth, dog named Laika। The flight was meant to test the safety of space travel for humans। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms।